Hello everyone, welcome to CMS Digital Classrooms. Today we are going to learn about the exercise 8A and 8B. Okay, so we have already explained about the basic thing about exercise 8A and 8B, what we will learn in 8A and 8B means algebraic expressions, what algebraic expressions are, what are the some terms related to algebraic expressions. So now we are going to check the questions which we have in exercise 8A and 8B. So the first question which is asking about exercise 8A is the write the following using literals, numbers, signs and basic operations. So the statement is given here. So using these statements you have to write what the expressions will be. Okay. So first question it is asking x increased by 12. So if you increased a 12 from x, so what will be the number that you have to write? Okay, so that you have to write here. You can say that if you increase 12 from x increased by 12 means 12 is first, and from 12 we are increasing x, right? This is 8b. So here, so x plus 12 will be the answer, right? X plus 12 will be the answer because we are increasing 12 from x से हम लोग 12 increase कर रहे हैं. Okay, now the same thing, question number 2 is asking y decreased by 7. So decrease means we are subtracting. So from y we are subtracting 7. Not don't do me this mistake. Some of the students what they used to write is x increased by 12 को लिख देते हैं 12 plus x, so that it will be wrong. So here x increased by 12 means we have to add 12 in x. Here y decreased by 7 means we have to subtract minus 7. We have to subtract 7 from y minus 7, not 7 minus 1. Okay, so this is the most important thing you have to keep in mind. आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर x इंक्रीज बाई 12 बोल रहा है मतलब x में 12 ऐड करना है. अगर मान लीजिए वहाँ पे बोला जाता है x इंक्रीज बाई 3 सो x प्लस 3, x इंक्रीज बाई 7 सो x प्लस 7. यहाँ पे y decreased by 7 लिख रहा है तो y decreased by means y minus 7. So if it is asking y decreased by 5, it will be y minus 5. If it is saying y decreased by 9, so y minus 9. तो इस तरह से ये स्टेटमेंट को हम लोग जो है इक्वेशन में लिख सकते हैं, राइट? So question number 3 is asking the difference of a and b. So a and b difference you can write it as a minus b. यहाँ पे दो केस हो सकता है. एक तो जब a बड़ा हो तो a माइनस बी होगा, जब b बड़ा होगा तो b माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है कि कौन सा नंबर से कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो हेयर डायरेक्टली इट इज सेड that the difference between a minus b, so you can either write a minus b or b minus a, but when a will be greater than a minus b, when b is greater than b minus a. Okay, then question number 4 is asking the product of x and y added to their sum. So the product of x and y is x into y. Now the sum of x and y is x plus y. So the statement will become the product is x and y. So again we are adding the sum of x and y. So this is how the product x and y is here, and then sum is also x plus y. So x multiply y plus x plus y. So this will be the statement. Then we have question number 5. Question number 5 is asking 1/3 of x multiplied by the sum of a plus a and b. So first 1/3 means what, that you have to understand. So 1/3 means 1 by 3. Okay, 1/3 of x means 1 by 3 multiply x, so x by 3. तो जो भी नंबर का 1/3 बोला जाएगा that divided by 3. अगर हम बोलते हैं 1/3 of 7, so it will be 1 by 3 multiply 7 means 7 by 3. Okay, so if I am saying 1/3 of y, so 1 by 3 multiply y, so y by 3. If I am saying 1/3 of 10, so it will be 1 by 3 multiply 10, that means 10 by 3. So this is all about 1/3. If it is asking 1/3 means 1 by 3. If it is asking 1/4 means 1 by 4. If it is asking 1/5 means 1 by 5. So of any particular number, whatever it is talking about. Okay, so this is all about 1/3 of x, and question number 5 is like 1/3 of x multiplied by the sum of a and b. So sum of a and b is a plus b. Okay, so 1/3 of x is x by 3. So x by 3 multiply a by b will be x multiply a by b by 3. So this is how the final equation will come, this one. Okay.
Now question number 6, we have 5 times x added to 7 times y. So 5 times x means 5x and 7 times y means 7y. So 5x plus 7y. Okay, so this is how 5x plus 7y will be the answer of question number 6. Okay, so now let's move to question number 7. Question number 7 is asking sum of x and the quotient of y by 5. So sum of x and the quotient of y by 5. So first we have to find the sum of x. So sum of x means x plus quotient of y by 5. So y by 5 means y by 5. So x plus y by 5 will be the equation, very easily 7. So this is how question number 8. 8 is asking x taken away. Taken away means subtracting from 4. So 4 से x घटा लेना है. So here very simply you can see here x minus 4. Okay. So now next we have is 2 less than the quotient of x by y. Quotient of x by y is x by y, x divided by y. Okay, and you are taking away how much? 2 less. 2 less than means 2 you have to subtract. So this is how x minus y, x by y minus 2. Now question number 10 is x multiply by itself. So very easy, x multiply itself means x multiply x. So x multiply x is how much? X into x is x square. So here x to the power 2 or x square, however you will read. इसी तरह से question number 11 we can say twice x increased by y. So twice of x means 2 multiply x and increased by y means you are adding y. So 2x plus y will be the final equation. So this is how question number 11 will be 2x plus y. Okay. So now what do we have is question number 12. So 12 is asking thrice x added to y squared. So thrice x means x multiply 3. Okay, so 3x and added to y squared means plus y square. So this is how 3x plus y square will be the required answer. Now next which we have is question number 13. Question number 13 is asking x minus twice of y. Very easy. So x, but here it is asking x minus twice of y. Okay. Question number 13. X minus twice of y, very easy, x minus 2y. Okay, so this one. Now we have question number 14. So 14 is asking x cubed. So x cubed means x to the power 3 less than y cubed. So first y cube you have to write because it is subtracting from y cube. So x cube is less than y cube. That means here don't do mistake. This is most important thing. So we are subtracting x cube less than y cube. So you have to first write y cube minus x cube. This is the thing which you need to take care. यहाँ पे गलती करते हैं normally students. Okay. अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का अगर बात करें, 15 is asking the quotient of x by 8. तो यहाँ पे x by 8 पहले हो गया and the quotient of x by 8 is multiplied by y. So y को साथ multiply कर देना है. So इस तरह से x by y multiply x by 8 multiply y is equal to xy by 8. So this is how you can solve all the questions of question number 1. Now let's move to question number 2. Question number 2, question first see, question first try to understand. Question is asking Ranjit scored 80 marks in English and X marks in Hindi. So Hindi's marks we don't know, but English marks of English is given. So what is his total score in the two subjects? So very easy, that whatever the score in Hindi plus whatever the score in English, so we will add both. So if you add, that answer will come 80 plus x. Okay, so this is how Ranjit's total score will be 80 plus x. Now let's move to the next question, which we have is question number 3. Question number 3, what it is asking, first I am reading the question. Question number 3 is write the following in the exponential form. So exponential form के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि as much as times the numbers will be the power you have to write that much. So यहाँ पे 15 है पहला वाला में, दूसरा वाला में 20 है, तो b है यहाँ पे every number sir b, so b to the power 15 हो जाएगा. यहाँ पे y है, so y to the power 20 हो जाएगा. So यहाँ पे मान लो 15 की जगह पे अगर 18 रहता तो b to the power 18 हो जाता. यहाँ पे अगर मान लो 20 की जगह पे 50 रहता तो y to the power 50 हो जाता. वेरी इजीली, जितना टर्म्स रहेगा, जितना टाइम्स यहाँ पे रहेगा, उतना पावर में यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ
समवेयर इट मे बी मिक्स ऑफ सम नंबर्स ऑल्सो। यहाँ पे जैसे 14 है और बाकी a है और b है, तो 14 को अलग लिख लेंगे हम लोग, 14 मल्टीप्लाई जितना टाइम्स a है वो लिख लेंगे, तो a टू द पावर 4 हो जाएगी क्योंकि 4 टाइम्स है, और b टू द पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम लोग का हो जाएगा a टू द पावर 14 इंटू a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 3। सो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी देखेंगे, 6 है, 6 मल्टीप्लाई x टू द पावर 2 और y टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे 5 का, 3 इंटू z टू द पावर हाउ मच 3 एंड y टू द पावर 2 एंड x, ओके। सो सी 3 z to the power 3 y to the power 2 and x. So this is how very easily you can solve question number 8 is all the questions, okay. And next question, let's see about question number 4. Question number 4 is asking you what you have to do, write down the following in the product form. So here you have to just write in the प्रोडक्ट फॉर्म, जस्ट ऑपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में ये इस टर्म में दिया हुआ था, इसको आपको कंबाइन करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, जस्ट आंसर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन लिखना है, मींस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो वेरी इजीली जैसे उसको किए थे, यहाँ पे जितना बार है 2 टाइम्स है तो x को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, y 4 टाइम्स है तो y को 4 टाइम लिखेंगे, तो इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 4 टाइम्स। तो इस तरह से जस्ट ऑपोजिट करना है जो क्वेश्चन नंबर 3 का था वैसे ही, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 है तो 6 पहले लिखेंगे, 6 अलग से है, एंड y को 5 टाइम्स लिखेंगे, तो y को 5 टाइम्स, तो इस तरह से 6 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई करके 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे थर्ड का, जो 9 है, सो 9 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब इसी तरह से 10 का भी हम लोग का है, ठीक है। तो 10 में है 10 इंटू वाई टू द पावर 3, सो वाई टू द पावर 3 मीन्स वाई को 3 बार, सॉरी ए टू द पावर 3 तो ए को 3 बार लिखना है, बी टू द पावर 3 तो बी को 3 बार, सी टू द पावर 3 तो सी को 3 बार। तो इस तरह से आप अगर लिखोगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ये मिल जाएगा, ठीक है, ए टू द पावर 3, बी टू द पावर 3 एंड सी टू द पावर 3, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 8A इज ऑल द क्वेश्चन। 8A का सारा क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8B। 8B का भी सारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज का वो देखते हैं, ठीक है। तो 8B का क्वेश्चन आंसर जो है वो चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू दिया हुआ है A और B का, आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से एक्स और मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इफ a is equal to 2 and b is equal to 3, so find the value of these all. So very easily by putting the value of a and b we can find out the value of the particular equation. Okay, so first question is a plus b, very easy question. So a plus b means just 2 plus 3 is 5, 5 is the answer. So this is how you can do question number 2 also, but just putting the value of a के जगह पे 2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और b के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस a इंटू बी मीन्स 2 इंटू 3। तो जस्ट हम लोग a के जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, b के जगह पे 3 पुट कर रहे हैं, नथिंग एल्स, वेरी इजी, ओके। तो इस तरह से हम लोग 2 का स्क्वायर जानते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 2 इंटू 3 हो जाता है 6, तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग का हो गया 10, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम चीज a और b का वैल्यू पुट करना है, कुछ और करना नहीं है। तो a का वैल्यू हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे a इंटू बी मीन्स 2 इंटू 3 एंड माइनस a स्क्वायर मीन्स माइनस 2 स्क्वायर, सो 3 इंटू 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 स्क्वायर इज 4, सो 6 माइनस 4 इज 2। सो इस तरह से हम लोग जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू पूछा गया है, पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके बाकी सबका भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो इस तरह से हम लोग का 4 इंटू 4 माइनस 9 आएगा, तो माइनस 5। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पे ध्यान देने वाला बात है कि माइनस और प्लस कहाँ होगा। यहाँ पे नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट्स 4 माइनस 9 5 लिख देते हैं, जो कि गलत है। भले ही 9 माइनस 4 अगर रहता तो 5 होगा, ठीक है, बट 4 माइनस 9 अगर है तो वो 5 नहीं होगा, वो माइनस 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग, अगर आपको याद है, हम लोग ने पढ़ा है इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में, कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव इंटीजर आर देयर, so we used to subtract and use the sign of the greater number. So here the sign of greater number is negative sign, so whatever the difference we will get, we will use the sign of that.
So here 5 is the difference and greater number is negative number. So negative sign we will use here. That is why the answer will be in -5. Okay. So this mistake don't do. Keep in mind this thing, very important. Okay. Subtractions, because as I told that negative numbers plays very important roles here. Now in the same way you can do question number 5 also, just putting the value of a and b. So a is 2, so 5 into 2 square minus 2 into 3. Okay, so इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो 20 minus 12 आएगा, तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से 6 1 also, a cube means 2 cube minus b cube means 3 cube. So 2 cube and 3 cube will be 8 minus 27, so minus 19. यहाँ पे भी सेम थिंग है कि प्लस 8 है माइनस 27 है, तो इसका डिफरेंस करके जो नेगेटिव साइन है उसका साइन हम लोग यूज करेंगे और नेगेटिव 19 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. तो दिस इज हाउ यू कैन डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Now moving to question number 2. Question number 2 is also same, but here 3 value are given. So value of A, B and C 3 terms given. So यहाँ पे हम लोग ने याद आपको है तो हम लोग ने पढ़ा था जो डिफरेंट algebraic expressions होता है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स. तो मोनोमियल्स में क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है algebraic expressions which contains only one terms. Okay, तो एक ही टर्म्स रहता है. फॉर एग्जाम्पल 5x, 3x, okay, 4x y square. So these are the expressions where we have only one terms. Then binomials are 2 terms. Then trinomials are 3 terms. So this question number this is based on trinomials, 3 terms वाला है. तो x, y एंड z का वैल्यू दिया हुआ है, सेम चीज है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है. ठीक है, जस्ट वैल्यू अलग है यहाँ पे. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का अगर बात करें तो 1 का x का वैल्यू दिया हुआ है 1, y का वैल्यू दिया हुआ है 2 एंड z वैल्यू ऑफ z इज गिवन 5. तो इस तरह से 3 इंटू वी हैव जस्ट पुट इंस्टेड ऑफ x वी हैव पुट 1, इंस्टेड ऑफ y वी हैव पुट 2 here and instead of z we have put 5, and then after multiplying 3 into 1 is 3, 2 into 2 is 4 and here 4 into 5 is 20. तो ये इक्वेशन आया. अब यहाँ पे भी सेम खेल है हम लोग का. सेम थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. 3 and 20 are positive but 4 is negative. So here first we will add the positive number. So this will be 23 minus 4. So 23 minus 4 is 19, right? And which sign is there? Positive sign is greater, so we will positive sign. So here plus 19 will be the answer. इस तरह से यहाँ पे 19 हो गया हम लोग का. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कुछ जो हम लोग को ध्यान में रखना है इस तरह से. ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 we have is x square plus y square plus z square. Very easy question. X instead of x 1 square plus y 2 square plus z 5 square. So 1 square plus 2 square plus 5 square. So 1 plus 4 plus 25. तो इस तरह से 1 plus 4 plus 25 सारा प्लस में है तो कोई टेंशन ही नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा प्लस में है तो इसको ऐड करके निकाल सकते हैं. ओके, तो 30 हो जाएगा इसका सम. Same thing, question number 3 also, just we need to put the value of x, y, z. So 2 into 1 square minus 3 into the value of y is 2, so 2 square plus z square means 5 square. So this is how this will be the required equation. And after adding this, first you have to add 2 and 25 because these two are the same sign. So 25 plus 2 is 27. So 27 minus 12 is 15. This is how 15 will be the answer. So whenever you want to solve any question, if you need, you just pause the video. Maybe I am explaining very fast because so that you can cover these 2 exercise in this video only. Okay, so if you want to write, you just pause the video and note it down. Okay, so this is how you can solve these all questions by putting the value of x, y and z. If you find any doubts in any questions, just you can tell me. Question number 4 is also the just same, we are putting the value of x, y and z. Then question number 5, 6 like same. Here question number 3 is slightly difficult. Why is difficult? Because here the value are different, I mean in negative. So the value of p and q given in negative and then the value of r is given in positive. So here if you don't know the operations related to the negative number, then you can only face the problem. Okay, I have already explained this type of questions in live classes also, but still here I am explaining. For example, minus 2 square. So minus 2 square will be 4
okay, and then minus 1 square will be 1 and minus 3 square will be I mean not minus 3 square, here this is 3 square only, so 3 square will be 9. तो इस तरह से यहाँ पे प्लस 2 है 4 और 1, so 4 plus 1 is 5, 5 minus 9 is minus 4, okay, because minus number is greater, so this is how minus 4. So this is how you can solve the rest of all also by putting the value of p, q and r as like x, y and z only, but here the thing is very important to take care that minus numbers are there, my negative numbers are there, so negative numbers you have to keep in mind very I mean carefully, okay. So negative numbers, square of negative numbers I already explained that whenever if it is even, square is in even, then what happens, and if square is in odd, then what happens. So this most important thing you need to keep in mind when it is even numbers, means 2, 4, 6, 8, then the square of that will be square or to the power 4 or to the power 6, like this. Even number is there if in the power, then the negative number will be changed into positive number, and if it is odd number as like to the power 3, 9, 11, 13, 15, then that will be negative only, okay. तो इसको ध्यान में रख सकते हैं. उसके अलावा जो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करने से जो नंबर्स तो किस तरह से होता है वो ध्यान में रखना है. उसके बाद ऑपरेशंस जो होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, एडिशन स्पेशली ऑफ इंटीजर्स, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस चैप्टर. तो ये सारे तरीके से हम लोग जो है जो भी क्वेश्चंस है सारा सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग राइट द कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा है. तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन 13x, तो 13x का कोएफिशिएंट क्या है, 13 हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ y इन माइनस 5y. तो माइनस 5y में ये चीज ध्यान रखना है कि माइनस जो है इंटीजर्स में माइनस को भी लेना है कोएफिशिएंट में, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बता दिया कि y का कोएफिशिएंट 5 है, 5 नहीं होगा, y का कोएफिशिएंट माइनस 5 होगा, ठीक है. तो यहाँ पे 6ab का कोएफिशिएंट अगर a का पूछा जा रहा है तो ये 6b होगा, और b का पूछा जा रहा है तो 6a होगा, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है किसका पूछा जा रहा है, ठीक है. तो इसी तरह से 7x माइनस 7x एंड z में अगर z का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है तो माइनस 7x होगा, और अगर x का पूछा जा रहा है तो माइनस 7z होगा. तो इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ ए नंबर बता सकते हैं. इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाएं तो 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द नंबर. सो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर होता है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है. तो यहाँ पे ए बी के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका 1 ही हो जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. माइनस 6ab के साथ माइनस 6 है, 7xyz के साथ 7 है. तो न्यूमेरिकल नंबर जो भी होता है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है. अब उस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग बात करें, सो राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ दीज ऑल नंबर्स. सो कांस्टेंट टर्म्स हम लोग ने पढ़ा था कि जिसके साथ कोई भी इस तरह से ये नहीं रहता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी इस तरह से टर्म्स नहीं रहता है, उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जिसके साथ भी कोई भी इस तरह से ये नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है. तो यहाँ पे देखो 8 जो है ये सिंगल में है, 8 के साथ कोई भी इस तरह से डिजिट नहीं है जो कि वेरिएबल्स जिसको बोलते हैं चेंज हो सकता है, वो नहीं है. तो ये हम लोग का कांस्टेंट टर्म्स होता है. तो 2 चीज हम लोग पढ़े थे, एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. तो इस तरह से जो भी लास्ट वाला नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म्स हो जाता है, ठीक है. तो उसी तरह से हम लोग अगर बात करें 7 में पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. तो हम लोग ने पढ़ा है तीनों तरह का और भी जो भी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये होता है हम लोग का एक्सप्रेशंस होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. मोनोमियल्स जिसमें एक ही टर्म्स हो. यहाँ पे जैसे आप बात करें कौन कौन सा चेक करेंगे हम लोग, कौन कौन सा है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स है वो मोनोमियल्स हो जाएगा, जिसमें 2 होगा तो बाइनोमियल्स हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स एंड देन पोलिनोमियल्स, ओके. सो इस तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो ऑल द टर्म्स मतलब वेरी इजीली हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं. जैसे
फर्स्ट वाला का अगर बात करें तो 4x⁵ एक टर्म्स हो गया, माइनस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाला चीज है कि हम लोग को जो ये होता है साइन जो होता है माइनस साइन अगर हो तो वो भी साथ में लेना जरूरी है। तो -6y², ठीक है। तो इस तरह से जो ऑपरेशन यहाँ पे जैसे -9, तो माइनस अगर रहे तो माइनस को भी साथ में लेना है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर 9 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स मतलब हम लोग ने पढ़ा था कि जिसमें सेम तरह का टर्म्स हो, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 वाला a² b² -2a² c² एंड 4a। तो यहाँ पे a² जो है और 2a² जो है ये लाइक है। क्यों लाइक है? क्योंकि दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, जो वेरिएबल्स जो है वो सेम है, a² है, ठीक है, और इसमें 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 है। इसी तरह से दूसरा वाला अगर बात करें तो 3x है, 4xy है एंड देन yz है एंड yz, तो -yz और 1/2yz, ये दो टर्म्स है जो लाइक में है, बाकी कोई भी लाइक में नहीं है। लाइक में मतलब वही होता है जो सेम होता है, जिसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 8B's ऑल क्वेश्चन। Okay, now I hope you can solve by yourself. You understood very nicely exercise 8A and B. But still, if anyone having any doubts, you can ask. Thank you. Have a good time. Take care and bye-bye.